Hello everyone. In previous lecture, I explained you SQL. In SQL, I explained previous lecture the functions, maths functions, string functions. Uh, these functions I explained you in last lecture, and I explained that also कि how to use functions in your SQL. Okay. So today's lecture, I explain you the joins, which joins, and what's the types of joins are included in a SQL, and how to write a joins query in your SQL. Okay, these topics I covered today's lecture. Okay, so let me share my screen. So here you can see today's lecture. I will explain you SQL joins, theory, examples, and output of these joins. Okay. So joins clause combines two row combines row from two or more table based on relatable column between them. Okay. सो जो जॉइंस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि दो टेबल को ज्वाइन करते हैं। अभी उसमें अलग अलग टाइप्स है। ओके, सो दिस ऑल टॉपिक्स आई एक्सप्लेन वन बाय वन। सो फर्स्ट इज अ इनर जॉइन। ओके, इनर जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन। ओके, दिस आई ऑल एक्सप्लेन इन टूडेज लेक्चर। तो ये टेबल जो these two tables I used in my joins. Okay, so first I open my SQL. Okay, so here I create my table. Okay, so first create table. So which two tables I create? This mention in example. Okay, so first is my student table, and second is my course table. Okay, so in student table there is a three columns are included. First is a student ID, second is a name, and third is a course ID. So these two tables I create one by one. So I create a table student. Okay, now I include in value. Okay, first is a student ID. Student ID. So my ID are present in int format. That's why I write a int data type. Okay, after I enter comma again, I want to include a student name. So my student name value are present in alphabet format. So I enter a varchar data type. Okay, varchar. Now I want AR. Now I want to go my value
and end 50. Okay, so here I mention my limit. Again I enter. Now I want to add a student course ID. Okay, student course ID. So my ID are present in int format. So I enter a int data type. Okay. So here you can see my student table are successfully execute. Again I create one more table. This table is course table. Okay. So here I create table, create a table courses. Okay. Courses. And here now I want to add a course ID and course name column. Okay. So first I write course ID int and course name. Okay. Course name. So here you can see those two value are successfully create. Okay. Now I insert the value in this table. Okay. So insert values. Okay. So my student ID is one. Okay, my student ID is one. My name is alike and my course ID is 101. Okay. So this value are successfully insert my student table. Again, now I want to add a two value. Okay. So here I insert two more value. Insert into student values two, comma Bob, comma 102. This value is also successfully insert. Now again I add last value, insert into student values is 3. My name is Charlie. My course ID is 3. Okay. So these three value I insert in my student table. Now I add values in my courses table. Okay. So here I write insert into courses, insert into courses values.
So my course ID is 101. Okay. And my course is SQL. This value is successfully insert. Now again I enter two more value, insert into courses, values 102 my course ID, and Python is my course name. Again I last value insert into courses, values 103, comma Java. Okay. So here I insert all values in two table. Okay, first is student and second is courses. Now let me show you this value are successfully insert in your table or not. Okay, so first write select star from student. Okay, if you want to see my values are successfully insert in my table or not, that time you have to use or you have to write a select star from table name. Okay, so my table name is student. Okay, so here you can see this value are successfully insert in my table. Again I check my courses table, select star from courses. Okay, so here you can see these two column and values, three values are successfully insert. Okay, so next, so first I explain you right join. Okay, so what is a query of a right join? Select students name, courses name from a right. Okay, so राइट जॉइन क्या करता है? राइट कॉलम में से राइट कॉलम के जो वैल्यू है वो सब लेता है और मैचिंग वैल्यू दे गिव अ मैचिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड. ओके, so now I here enter this joins query, select student name comma course name. Okay, so this query I write one by one in my SQL. So first I write select student, 1 second, dot name comma course says table. You enter here second table name. My second table name is courses. Now I dot courses dot 1 second.
Here I enter from student. Here you enter your student first table name. My first table is student. Again I want to apply a right join. So here you enter right join. ओके, तो मुझे राइट जॉइन किस पे लगाना है? कोर्स टेबल पे। ओके, सो कोर्सेस टेबल पे। सो after that you enter on students. Here you enter a first table name student dot course id. Okay, course id. Again you enter equal course id. uh, they enter a two same column name here. Okay, so from my first table, student course id are same, and in this table courses id is also same. That's why I apply a right join in same column. Okay, so here I also include enter courses dot course id. Okay, course id. ओके, सो यहाँ पे एरर आ रहा है मेरा कि वो कह रहे हैं स्टूडेंट डॉट नेम, तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर करके स्टूडेंट नेम दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने डॉट करके लिखा है। दैट्स व्हाई दे गिव अ एरर। सो लेट मी फिक्स माय दिस एरर। अगेन आई एंटर, अगेन आई राइट दिस क्वेरी। ओके, आपको ऊपर का ही क्वेरी अगर नीचे लेना हो और उसमें ही एंड सॉरी उसमें ही चेंजेस करना हो, तो फर्स्ट यू राइट अ अपर एरो एंड अप एरो एंड डाउन एरो। ओके, सो एंटर। माय सेकंड इज फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट, अगेन एंटर राइट जॉइन राइट जॉइन कोर्सेस। अगेन स्टूडेंट डॉट एसी अंडरस्कोर आईडी इक्वल। Student dot courses ID in a on clause unknown column. Okay, so let me fix this error. ओके, सो यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है? यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कोर्स नेम डाला है, कोर्स आईडी डाला है, और इसमें मैं कोर्स आईडी सिर्फ डाला है, तो वो मैच नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई दे गिव अ एरर। सो नाउ आई वांट टू रीनेम, तो यहाँ पे मैं टेबल नेम को रीनेम करती हूँ। ओके,
मैंने रीनेम टेबल के लिए क्या ये बताया था, सिंटैक्स बताया था। तो रीनेम टेबल, व्हाट इज माय ओल्ड टेबल नेम, यहाँ पे मेंशन करना है स्टूडेंट कोर्स आईडी टू कोर्स आईडी, मुझे कोर्स आईडी ही फिर से एंटर करना है। ओके, ये दो, ये कॉलम और ये कॉलम का जो नेम है सेम चाहिए। ओके, सो टू कोर्स आईडी एंटर। तो यहाँ पे ये इश्यू हो रहा है कि वो कह रहे हैं जो टेबल, जो मैंने डेटाबेस यूज किया था कॉलेज, वो यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है बिकॉज दे शो एरर, स्टूडेंट कोर्स आईडी डज नॉट एग्जिट टेबल, सॉरी कॉलम नेम इन योर कॉलेज। सो सो नाउ आई ओनली एक्सप्लेन theory part. ओके, नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट fix my error. After next lecture I fix my error, and again I explain you how to write a query of a join in your SQL. Okay, so theory part I am explain करती हूँ। Okay, so this is my inner join. Okay, so inner join they can use to joins a two value from your table. Okay, so my left join, so next is left join. Left join the are used to uh, match two values from your table. Okay, so suppose you have a two table, and if you want to apply a left join, so they give all value from left side, and they give only matching value from left side. Okay, so this is my right join. Okay, right join are used to right, if you want to apply a right join. Okay, so they give all value from right side, and they give only matching value from your left side. Okay, this is a cross join. Still cross join are used to return a product of a both table. ओके, तो दोनों दो टेबल का जो प्रोडक्ट है वो शो करता है यूजिंग अ क्रॉस जॉइन। ओके, दिस इज माय सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन क्या करता है कि इट जॉइंस टेबल विद द हिम्स इटसेल्फ, खुद से ही वो जॉइंस अप्लाई करता है और अदर रो से कंपेयर करता है। ओके, सो this is my summary, but this I explain only theory part. Okay, let me fix my error after the next lecture, and I will explain you how to write a query of this table, of these joins. Okay, so टुडे के आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक।
next lecture. Thank you.